Romer model of endogenous growth. We've been talking about this model for quite some time now. एंड हमने फाइनल गुड सेक्टर के बारे में बात करी है रोमर इकोनॉमी में. वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरमीडिएट गुड सेक्टर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च सेक्टर, राइट? So, I mean, you look at it, anyone is free to prospect for the new ideas. Anybody could just find out new ideas. And in our model, what do we mean by new ideas? New ideas are the ideas or the designs which can make the new capital goods. Right? तो मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, मैं नए नए आइडियाज की तलाश कर रहा हूं जिससे नई कैपिटल गुड्स बन पाए, नई तरीके के कैपिटल गुड्स बन पाए. और वो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स फॉर्म बनाती हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स फॉर्म फाइनल गुड्स फॉर्म को बेचती हैं, और फाइनल गुड्स फॉर्म अल्टीमेटली फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं. हम इस न्यू डिजाइन्स आर डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, और हम इस इक्वेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, राइट? हम इस इक्वेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं यहां पर. आपने अगर पहले की रिकॉर्डिंग्स करी हो तो आपने ये देखेंगे कि हमने इसके बारे में यहां पे बात करी हुई है. दैट इज ए डॉट इज इक्वल टू गामा एल ए टू द पावर लैम्डा ए टू द पावर 5, कुछ ऐसा. अब यहाँ पे बस गामा की जगह थीटा लिख दिया, इसका क्या फर्क पड़ता है? ए डॉट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन ए, राइट? ये जो टेक्नोलॉजी, जो एंडोजेनस टेक्नोलॉजी है, that is the instantaneous change in A, or LA is the proportion of labor force which is engaged in finding out new ideas, which is engaged in research, right? लैम्डा मान लेते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी है. लैम्डा इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स which is engaged in research, and lambda is lying between 0 to 1, so it is less than 1. So ultimately diminishing marginal productivity set in होगी वहां पे भी, रिसर्चर्स के लिए भी. और अगर आप देखें तो ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए पे भी. दैट इज दिस phi is showing you the externality which is attached to giant shoulders effect. मतलब मान लीजिए जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को देखा हो, तो उसको बड़े लोग अपनी पीठ पे बिठा लेते हैं और वो और दूर तक देख पाता है. वो इसलिए दूर तक देख पाता है क्योंकि वो जाइंट शोल्डर्स पे बैठा हुआ है. रिसर्च के तरीके से यहाँ पे रिसर्च के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यह कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो रिसर्चर्स हैं ये भी ज्यादा अच्छी रिसर्च इसलिए कर पाते हैं बिकॉज और आइडियाज ऑलरेडी डेवलप हुए हुए होते हैं, उन आइडियाज पे ही वो काम करते हैं. तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड आइडियाज हैं वो जाइंट शोल्डर्स हैं, और उसके बियॉन्ड फिर वो देखने की कोशिश करते हैं. दैट इज एन आइडिया. फिर आगे यही बात करी गई है कि एक तो जो आइडियाज है वो इस इक्वेशन से डेवलप हो रहे हैं, और कभी भी जो भी कोई नया डिजाइन डिस्कवर होता है, इन्वेंटर को एक पेटेंट मिलता है. पेटेंट उसको ये एक तरीके का एक एक राइट देता है कि आप इस चीज को इतने समय तक आप ही यूज कर पाएंगे, आप ही के पास एक्सक्लूसिव राइट है कैपिटल गुड बनाने का. तो मान लीजिए मैं इन्वेंटर हूं, मैं रिसर्चर हूं, मैंने ये पेटेंट मिला है, और आप इंटरमीडिएट गुड्स फर्म है. तो आपको जब मैंने ये पेटेंट बेच दिया तो उससे मुझे कुछ प्रोसीड्स हुई, बिकॉज अल्टीमेटली तो मैं आप ही को बेचूंगा ना. आप इंटरमीडिएट गुड बना रहे हैं, आप कैपिटल गुड बना रहे हैं, उन प्रोसीड से मैं कुछ सेव करूंगा, कुछ कंज्यूम करूंगा. अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी प्राइस क्या होगा पेटेंट फॉर अ न्यू डिजाइन. हम मान लेते हैं कि कोई भी बिड कर सकता है जी पेटेंट के लिए, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा मैं उसको दे दूंगा. ठीक है, मैं उसको दे दूंगा. अब एक बात देखिए, मान लीजिए मैं कुछ एक तरीके का पेटेंट का कुछ प्राइस है जो मेरे अपने दिमाग में है, और जब आप बिड करेंगे प्राइस को, आप उस प्राइस पे खरीदना चाहेंगे मुझसे. आप कोई भी चीज खरीदते, मान लीजिए आप पेटेंट खरीद रहे हैं, तो 30 सालों तक मान लेते हैं कि आपके पास ये राइट रहेगा कि सिर्फ आप ही ये कैपिटल गुड्स इस डिजाइन के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं.
तो क्या आप ये नहीं देखेंगे कि अगले 30 सालों तक आने वाला जो प्रॉफिट है, उन सारे के सारे प्रॉफिट्स की वैल्यू आज क्या है? प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू. I'm getting the stream of revenues for future. So I'm going to find out what is the present discounted value for that investment, for those profits which I'm. अगर तो मुझे लगता है कि आपने जो प्राइस मांग रहे हैं वो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंटरमीडिएट फर्म, गुड फर्म से ज्यादा है, मतलब मेरे मेरे को जो प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं उन सब की वैल्यू आज जितनी है वो कम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अ पेटेंट, नोबडी would be willing to pay, right? No one would be willing to pay. मान लीजिए प्राइस ऑफ अ पेटेंट इज लेस देन द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू द प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंटरमीडिएट गुड फर्म. आप इंटरमीडिएट गुड फर्म है, आपने सोच लिया कि भैया इन सारे प्रॉफिट्स की वैल्यू आज जितनी है वो कहीं गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइस जो मांग रहा है. तो somebody else will bid higher. No, someone would be willing to pay. higher. मान लीजिए पीए जो है वो प्राइस है न्यू डिजाइन का. मान लेते हैं दैट पीए is the price न्यू डिजाइन, राइट? तो बेटा हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे ना. हम्म, अ, मैं ये रिसर्चर था. मैं इस पैसे को जो मिलेगा मुझे इस पेटेंट को देने के बाद आपसे, आप इंटरमीडिएट गुड फॉर्म में, मैं रिसर्चर हूं. या तो मैं इसको ये इज द प्राइस ऑफ अ न्यू डिजाइन, ठीक है आपके पास. आप चलिए आपके एंगल से सोचते हैं. आप इंटरमीडिएट गुड फॉर्म है, आपसे ये प्राइस पीए मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना पैसा आपके पास है. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट? मैं यहां पे लिख रहा हूं, अपने आंसर में मत लिखना. प्लीज डोंट राइट इट फ्रॉम in your answer. Think from the point of view of intermediate good firm. मैं आपसे प्राइस पीए मांग रहा हूं, आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है. आप इस पैसे को बैंक में भी रख सकते हैं और आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं. सो पीए is invested in a bank. An interest earned investing is what? RP. आप इंटरमीडिएट गुड फर्म है, मैं आपके एंगल से सोच रहा हूं, मैं आपसे प्राइस पीए मांग रहा हूं. आपके पास ये पैसा होगा ना, मान लीजिए, तभी तो आप ये खरीदने की सोच रहे हैं. तो आपके पास दो ऑप्शंस. ऑप्शन वन, आप बैंक में डाल दीजिए. ऑप्शन टू,
ऑप्शन 2, आप पेटेंट खरीद लीजिए। अगर आप पेटेंट खरीदते हैं, ठीक, आप पेटेंट खरीदते हैं तो आपको उस पेटेंट से कोई फायदा हो रहा होगा ना, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे उस पेटेंट को खरीदने से, राइट। और उसके बाद आप उसको बेच भी सकते हैं, मतलब उससे उसको बेच के आपको जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो वो आपकी बात है, राइट। इफ द अमाउंट EA is invested in the patent, patent, you can earn the profits, then earn the profits period, then sell the patent, आगे भेज दो, राइट। सो आई मीन इसका मतलब है जो वट एवर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस विल अकर, that is going to result from the change in the price of the piece, gain or loss that results from the change in the price of the patent, मतलब you'll be getting pi plus P dot A. P dot 8 is the change in price. P dot 8. In equilibrium, idea is that it should be the case that the rate of return from both the options should be equal. वही equilibrium है. So in equilibrium, must be the case at the rate of return in both of these investments the same. That means RPA equals to pi plus P dot A. So you can write the value as pi upon PA plus P dot A upon P. Along the balanced growth path, R is constant. So what is R? R is the price at which the supply of capital is equal to the demand for capital, right? And that is also proportional to Y by K. So along
The balance growth R is constant, right? Therefore, pi by PA must also be constant. Must also be constant. And when will pi by PA be constant? When pi and PA both are growing at the same rate, then only they will be constant. Which means that pi and PA grow at the same rate. At the same rate, right? And you have already shown in the last class, this is that pi a is 1 minus alpha into alpha y by a. You have shown this for a particular form, right? So that is proportional to y by a also. We have shown that pi is proportional. So this is the point which I was telling you that I'll be using that recording in this one, proportional y by a. And you know that the per capita output small y and a is growing at the same rate. Output small y and a grow at the same rate, right? Along the balanced growth path, g small y is equal to g a is they are equal, and that what comes out is that basically and gk they are all same, g small k, right, along the balanced growth path, right? So small y a, all of them are growing at the same rate. So that y by a, may not have to write this much in the answer, but I'm just writing this, will grow at the population growth rate. Population growth rate n. Population growth rate n, right? So pi by a is growing at the constant rate, which means pi and PA, they also have to grow at the same rate. And you also know this, that the per capita output small y and a, are they growing at the same rate, and capital Y by a is growing at the rate of n. That is the initial assumptions which you have made in the initial recordings. So this would mean you can write r equals to pi by PA plus n. So I can write this as r minus n equals to pi by PA. So PA equals to pi upon
r minus n. P equals to pi upon r minus n, right? Okay, so this is the price of the patent along the balanced growth path, PA. Patent along the balanced growth path, right? Okay, so we'll take the discussion further in the next class. Thank you, Beta.